In this video, we will discuss the traps related to making of constitution. This is part 2 of this video. I have already uploaded part 1. You can watch this on this channel. I have extracted these traps after the thorough study of last 46 years PYEQ from exams like CDS, UPSC CSC exam, EPFO, IES, NDA, IFOS, SCRA, and all the other exams conducted by UPSC. Okay, so these are the most important facts, or I would say tabs, which are set by UPSC in its prelims exam. So the trap one is कि यूपीएससी कैसे ट्रैप सेट करेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन derives its legitimacy only from Indian Independence Act 1947. But correct answer is कि it was the dual legitimacy. Politically legitimacy came from we the people of India in the preamble, and legally assembly was enabled by the act. Okay, so colonial continuity plus popular sovereignty fiction. So do remember this fact that it was dual legitimacy. लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. यूपीएससी का ट्रैप क्या होगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी प्रिपेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. ओके, बट डू रिमेंबर कि ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड ओनली इन इंग्लिश. ठीक है, हिंदी वर्जन वाज ऑथराइज्ड लेटर. हिंदी वर्जन को लेटर ऑन ऑथराइज किया गया था. रोल ऑफ बी एन राव. यूपीएससी कैसे ट्रैप सेट करेगी कि बी एन राव वॉज मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी. बट करेक्ट आंसर इज ही वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, नॉट अ member. Drafted the initial version, that is, he gave the memorandum. Later handed to Ambedkar committee. Okay. Source of federal idea. India's federal feature were borrowed mainly from USA or Canada. ठीक है, but the correct answer is Government of India Act 1935 was the primary template. US and the Canada only the secondary. Okay, do remember. Legal continuity. यूपीएससी ट्रैप कैसे सेट करेगी? कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिश्ड ऑल द प्री 1950 लॉज immediately, but do remember article 372 continued all laws unless inconsistent with the constitution in order to ensure stability. ठीक है, तो आर्टिकल 372 हमें याद रखना है. लास्ट वीडियो में मैंने आपको 371 की सारी ट्रिक्स याद करवा दी थी ना. मास meg key. Okay, to remember all the state from 371A to J. ठीक है, you can watch that video. क्रिटिसिज्म बाय अंबेडकर. अब यहाँ पे यूपीएससी कैसे ट्रैप सेट करेगी कि अंबेडकर डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लॉयर्स पैराडाइज. बट करेक्ट आंसर इज दैट वाज आइवर जेनिंग. ओके, सो आइवर जेनिंग described the constitution as a lawyer's paradise, not Ambedkar. Ambedkar praised it as a workable, flexible and strong enough to hold India together. Ivor Jennings को याद रखना किससे? लॉयर्स पैराडाइज से. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने वी द पीपल क्लेम एंड सेकंड फेडरल वर्सेस यूनिटरी चॉइसेस. तो यूपीएससी का ट्रैप क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन वाज डायरेक्टली इनेक्टेड बाय एंटायर पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पे क्या था
कि ट्रैप कैसे सेट करेगी यूपीएससी. द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डायरेक्टली enacted by entire people of India, but the correct answer is Constituent Assembly was indirectly elected on the limited franchise, yet invoked people, we the people, for legitimacy. ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना, dual legitimacy. So that concept is applying here. Okay, so do remember these facts. So trap 8, the framers copied the US federal models for India. Okay, but the correct answer is they created union of state like Canada and the 1935 Act to secure a strong center. National flag adoption. ट्रैप कैसे सेट होगा? नेशनल फ्लैग वाज अडोप्टेड अलोंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950. बट द करेक्ट आंसर इज फ्लैग विद द अशोक चक्र adopted earlier on 22nd July 1947 by the Assembly. Judicial review source. Trap 10. Judicial review was India's original innovation. So do remember, we borrowed it from the USA and reinforced by the colonial practices under the 1935 Act, enhanced via Article 13, Part 3 and Part 5. Okay, so these were the 10 most important traps which UPSC sets in its prelims exam. Okay, so see you in the next video.